आज हमें हालो अल्केन रो 4th क्लास पढ़ेबा। आगो तो पढ़ेइथिले कोन पढ़ेइथिले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ मेटल आउटे कोन कहथिले एलिमिनेशन रिएक्शन जोटा थिला बेस्ड ऑन सेटजेव रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। आज आउटे पढ़ेबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदी क्वेश्चन डाला व्हाट हैपेंस व्हेन alkyl halide react with KCN and AgCN। हमें alkyl halide जो KCN कि AgCN से रिएक्शन हो कौन हो यदि alkyl halide हमरो KCN से रिएक्शन हैला तो सिंपल कौन K plus X minus तो कौन हो RCN plus KX, that is alkyl cyanide। जदि alkyl halide टा AgCN सहित रिएक्शन होबो तो उल्टी जीवो कोन होबो RNC plus AgX। This is alkyl isocyanide। देखो यदि KCN सहित रिएक्शन होची साइनाइड फॉर्मेशन होची यदि AgCN सहित रिएक्शन होची कोन होची आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होची। एटा काहे की होची देखो काहे की होची यदि KCN जोटा अछि सेटा उठेला आयोनिक कंपाउंड AgCN जो फॉर्मेशन होची सेटा उठेला कोवैलेंट कंपाउंड। ए जो हमें K plus Cn minus Cn minus होगा Cn minus K plus Cn minus ये कौन होगा Ag plus Cn minus तने कौन फॉर्मेशन होला दी जन को पाकरे Cn minus ता कौन Cn minus ता उठेला ambidentate न्यूक्लियोफाइल। ambidentate न्यूक्लियोफाइल माने कौन जहारो दीटा डोनेटिंग साइड थी माने C और N कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करि पारथबो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करि पारथबो जहार दीटा डोनेटिंग साइड थिबो दिस इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तले हम कोन कर परबा द न्यूक्लियोफाइल which have both the डोनेटिंग साइड्स जो न्यूक्लियोफाइल दीटा जक जो दीटा थिबो तार डोनेटिंग साइड थिबो एटे Cn अछि Cn माइनस डोनेटिंग साइड हे परिबो ना कार्बन भी डोनेटिंग साइड हे परिबो तो नाइट्रोजन भी डोनेटिंग साइड हे परिबो ताले कोन होबो देखो जो एटी तो KCN हैला आयनिक कंपाउंड पर AgCN हैला उटे कोवैलेंट कंपाउंड। तो KCN को मानिले कोन होबो K plus Cn minus। तो हमें RX सहित रिएक्शन कले तर CH3Cl अछि तो CH3Cl सहित यदि KCN टा में रिएक्शन कले कोन होबो CH3Cn plus KCl। तो देखो Cn माइनस जो हमें पाइले एटा कोन होला उटे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तार दीटा डोनेटिंग साइड अछि दीटा डोनेटिंग साइड माने यदि कार्बन सहित C लागि परिबो किबा नाइट्रोजन सहित C लागि माने कोन थी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन भी हे परिबो किबा कार्बन सहित नाइट्रोजन भी बॉन्ड फॉर्मेशन हे परिबो काहे कि जो Cn टा हम एटी बाहर छे it has two donating side that is ambidented nucleophile। तो there is formation of two types गुटेला C bond हे परिबो किबा CN bond formation हे परिबो। So there is formation of both C bond and CN bond ये प्रकार बॉन्ड फॉर्मेशन हे परिबो किंतु CC bond टा is stronger than CN bond। जो CC bond हैला
your CC bond is stronger than the CN bond. CC bond is strong and जोटा strong सेटा फॉर्मेशन हबो अरे C सहित C जो बॉन्ड फॉर्मेशन है सेटा स्ट्रांग तो C सहित C रो बॉन्ड फॉर्मेशन ता हबो तो C सहित C माने कोन CH3 सहित CN तो CH3 CN बॉन्ड फॉर्मेशन होची when KCN is added. But in case of AgCN रोटे कोवैलेंट कंपाउंड तो कोवैलेंट कंपाउंड हमें इजीली ब्रेक डाउन करि परिबा नाही because there is mutual sharing of electrons. तो कार्बन नाइट्रोजन भितरे जहार पावर बेसी होबो से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करिवो तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का पावर बेसी कार्बन नाइट्रोजन भितरे नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव व्हिच मींस नाइट्रोजन टेबरो बेसी पावर तो नाइट्रोजन डोनेशन करिवो तो नाइट्रोजन डोनेशन कोन करिवो आर से कोन लागिवो n लागिवो RNC plus AgX ताले क्वेश्चन जो पड़िबो ताले क्वेश्चन कोन पड़िबो why alkyl halide gives different product with KCN and AgCN. Alkyl halide टा KCN AgCN से तो different product कांकी दोची तो आंसर कौन हो हमें कौन पाइले CN माइनस जोड़ा ला is an ambidentate nucleophile which is that of both of the donating side थिबो तो KCN जो कंपाउंड आनेले सेटा ला ionic compound तो ionic compound भांगिले हे इजीली भांगी परिबा so there is possibility of what possibility रहइबो both CC bond and CN bond तो CC bond formation भी हे परिबो किंबा CN bond formation भी हे परिबो but CC bond is stronger than CN bond. CC bond is strong कहाँ पे क्या CN bond है so there is formation of CH3CN किंतु जो कि AgCN रहइबो सेटा की प्रकार कंपाउंड उटे कोवैलेंट कंपाउंड तो कोवैलेंट कंपाउंड का में इजीली ब्रेक डाउन कर परिबा नाही तो जहार पावर बेसी रहइबो सीए लोन पेयर दबो कहार पावर बेसी नाइट्रोजन पावर बेसी तो नाइट्रोजन दबो तले कोन हो उल्टी जीवो एठी कोन होची KCN रे रिएक्शन करिबा कोन प्रोडक्ट होची CH3CN कि जो हम AgCN लगेबा तले कोन हो CH3NC so nitrogen atom is free to donate lone pair of electron nitrogen ta lone pair of electron donation karibo so there is formation of CH3NC that is alkyl isocyanate एमती क्वेश्चन पड़े एमती आंसर करो तो सही बढ़िया अछि गुटे alkyl halide टा Ag से रिएक्शन of कौन फॉर्मेशन करिवो सिमिलरली alkyl halide टा Kn से रिएक्शन करले कौन फॉर्मेशन करिवो the alkyl टा Ag से रिएक्शन करिवो तले कोन हो सिंपल AgX माइनस हो जी एंड रहला कोन Rn2 plus AgX that is nitro alkane
तो यदि KN सहित रिएक्शन करिवो जेमिति CN थिना C द्वारा डोनेशन करथला आ थरे कोन N डोनेशन करथला एदि जेति कोन N2 अछि तो N डोनेशन कला आ थरे कोन करिवो O डोनेशन करिवो RONO plus KX this is alkyl nitrate हेले जेमति सेमति KCN समय रे साइनाइड फॉर्मेशन होतला AgCN समय रो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होतला से बेला AgN रो समय कोन नाइट्रो अल्केन फॉर्मेशन हबो KN रो समय कोन फॉर्मेशन हबो अल्काइल नाइट्रेट जति बंद सला हमरो हालो अल्केन माने अल्काइल हालाइट सेतिर बेस्ट किछि कन्वर्जन होछि देखो सर टिके होल्ड करू तो हालो अल्केन्स जो गुडा हमर जनरल कांसेप्ट सब कहि देली केमति कोन होबो का ऊपर बेस्ट करी कहि देली वर्तमान कन्वर्जन किछि पड़ेगा कन्वर्जन दि चारटा कहूची फर्स्ट गुटे कहूची दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन पाखरो कोन तयारी करबी 2 ब्रोमो प्रोपेन तो 1 ब्रोमो प्रोपेन स्ट्रक्चर हो CH3 CH2 CH2 Br तो 2 ब्रोमो प्रोपेन कोन स्ट्रक्चर CH3 CHBr CH3 तो बर्तन केमती कन्वर्जन करिया एटा हम कोन दबा अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक KOH प्रेजेंस रो कोन होबो डिहाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस माने गुटे जारो H बाहरी गुटे जारो ब्रोमीन कहथिली तो CH2 CH लेखुची H और Br में कोन हो HBr फॉर्मेशन हे गेला Br माइनस H प्लस अरे कोन हेला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमें एथिरे ऐड करबा HBr ऐड करले कोन हो HBr का एडिशन जोडा दे दैट इज मार्कोनी कोप्स रूल એટલે CH और CH2 रो कहार पावर बेसी CH2 पावर बेसी दैट इज नेगेटिव चार्ज एटा कोन पॉजिटिव चार्ज HBr भांगले कोन हो H plus Br minus ते कोन लागि जो CH3 CH plus सहित Br minus रे CH सहित Br लागि छी ये CH2 minus H plus कोन CH3 that is 2 bromo propane हमें कन्वर्जन कोन बोले फर्स्ट अल्कोहलिक KOH देले कोन फॉर्मेशन हैला अल्किन फॉर्मेशन हैला अल्किन सहित मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन करे कोन फॉर्मेशन हैला that is 2 bromo propane next butte 1ENE 2 butte 2ENE butte 1ENE रो मैं केमती butte 2ENE तयारी करबे butte 1ENE फार्मूला कोन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एथरा हमें कोन तयारी करबा butte 2ENE butte 2ENE फार्मूला कोन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 तो जो butte 1ENE जो थिला सेथरा हमें HBr ऐड करबा followed by Marconi-Cox rule तले कोन हो CH2 कहार पावर CH2 पावर बेस एटा नेगेटिव चार्ज एटा हला पॉजिटिव चार्ज तो HBr रे कोन H पॉजिटिव Br नेगेटिव तो एडिशन ऑफ अपोजिट चार्ज तले कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो CH3 CH2 CH प्लस सहित Br माइनस CH Br तो CH2 माइनस तो H प्लस दैट इज CH3 तापर हम यहाँ कोन होबा अल्कोहलिक KOH देले कोन हो हाइड्रो डिहाइड्रो हालोजिनेशन माने सिंपल मॉलिक्यूल माइनस हो ए CH2 भांगी लेकली CH दैट इज H Br HBr कोन H plus Br minus तो Br minus हैला H plus शिफ्टिंग हे गेला तने कोन हेला स्ट्रक्चर
CH3CH double bond CH single bond CH3 that is but 2ene आरंभ कले but 1 ene रो मार्कोनिक ऑप्शन एडिशन कले तापरे कोन कले एलिमिनेशन रिएक्शन बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH कोन फॉर्मेशन हैला but 2ene नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल टू कोन हम तयारी करबा इथाइल आयोडाइड कोन तयारी कले इथाइल अल्कोहल टू हम कोन तयारी करबा इथाइल आयोडाइड तयारी करबा तो इथाइल अल्कोहल सहित जदि हमें SOCl2 मिसेबा SOCl2 माने कोन दिस इज आयोनाइल क्लोराइड तो थायोनाइल क्लोराइड माने कोन जोटा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine वे कोन प्रोसेस वे डायजन्स प्रोसेस वे तले कोन हो OH उठिबो ता बदले कोन बसिबो Cl बसिबो तले कोन ना CH3 CH2 Cl ता सहित हम जो करबा NaI सोडियम आयोडाइड Na plus Cl कोन है NaCl तले कोन फॉर्मेशन हैला CH3 CH2I तले एटा हम कोन को जे सोडियम आयोडाइड ऐड करछे कहा प्रेजेंस रो ऐड करछे एसिडोन प्रेजेंस रो ऐड करछे ए रिएक्शन रो हम कोन करछे फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन दैट इज द स्पेशल मेथड प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन एबले किछि कन्वर्सन अछि कोड को लागिवो केमति करबो तो टोटल दिन छडा पडिला परे तू जानि परिबो को रिएक्शन कोड यूज हुए केमिति यूज हुए ताले हमरो अल्काइल हाइड्राइड सोला कंप्लीट हैला तो एई जो दोस बोई जो क्वेश्चन सब अछि सेउडा सब करिवो तो जेंति अल्कोहलिक KOH प्रेजेंस कोन होछि एलिमिनेशन रिएक्शन होछि माने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होछि कि एक्वास KOH प्रेजेंस कोन होछि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन होछि एमति होछि जेंति केसिन सहित कोन सैनाइड फॉर्मेशन होछि एजीसीएल समरे कोन होछि आइसोसैनाइड फॉर्मेशन होछि तो AgNO2 ऐड करले कोन नाइट्रो अल्काइन फॉर्मेशन होछि KNO2 ऐड करबे कोन फॉर्मेशन होछि अल्काइल नाइट्रेट फॉर्मेशन होछि सेबळे एक्सेप्शन होछि कोडी कोन लागिवो जदि देखियो सेठी हमें क्लोरो इथेन रो तयारी करबा कोन ब्यूटेन तयारी करबा क्लोरो इथेन माने CH3 CH2 Cl ब्यूटेन तयारी करिया माने CH3 CH2 CH2 CH3 माने डबल हो एठी केतरा अछि दीटा एठी केतरा कार्बन अछि चारटा तो एठी दीटा कार्बन थिला केतरा कार्बन चारटा कार्बन आला माने डबल हेले को रिएक्शन हुए ऊर्ज रिएक्शन कोन हुए गुटिए जाथिबो तारो डबल हबो तो CH3 CH2 Cl ओ रिएक्शन में कास्ट रिएक्शन करियो सोडियम मेटल से रिएक्शन करियो Cl CH2 CH3 कोडा मने पड़छ ऊर्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन ड्राईथर मीडियम ले कोन हेला 2NaCl दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3 तले कोन फॉर्मेशन हबो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन हम जानि पाले क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड कोन फॉर्मेशन कले ब्यूटेन फॉर्मेशन कले सेमिति ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ला कोन हबो एटी अल्केन फॉर्मेशन ला ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ला कोन हबो अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन हबो फिटिक रिएक्शन ला कोन फॉर्मेशन हबो डाई फिनाइल फॉर्मेशन हबो आ एते इंपोर्टेंट जिंस हला SN1 आ SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन कोन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर SN2 रिएक्शन कोन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाइमोलिकुलर एई बेस्ड करी कि कोटा को रिएक्शन हबो जेमति SN1 रिएक्शन लो स्टेबिलिटी ऑर्डर कोन थिला 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो 3 डिग्री जोटा हबो सेटा बेसी सबटू स्टेबल हबो हेबे SN2 रो कोन हबो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जोटा प्राइमरी हबो सेटा बेसी स्टेबल हबो से अनुसार देखियो क्वेश्चन केमति पडियो जदी पडिथिबो एई दिटा भितरु कोटा SN1 रिएक्शन जीवो इजीली तो एठी सब कार्बन अछि एठी तीनटा सहित लागि छि दैट इज
3 डिग्री कार्बन एटम एठी जो क्लोरीन लागी कार्बन एटम जो ता सहित गुटी अछि दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम कोटा स्टेबल 3 डिग्री टा स्टेबल पहले जे कोटा स्टेबल एटा स्टेबल हो माने से स्टेबिलिटी बेस्ड ऊपर करी कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखिबे कोटा बेसी इजीली SN1 रिएक्शन जीवो कोटा इजीली SN2 रिएक्शन जीवो तो हेलो अल्केन रो जनरल कांसेप्ट एटा पुनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जे इंपोर्टेंट कोन चली आसीबो मार्कोनी कैप्सूल एंटी मार्कोनी कैप्सूल तापरे कोन होन्स डिको रिएक्शन आउ दीटा कोन छी स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन जोटा आयोडो अल्केन तयारी करछे सेटा कोन फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन जोटा फ्लोरो अल्केन तयारी करछे सेटा हला कोन स्टुअर्ट रिएक्शन तापरे हमें अल्केन एडिशन करिबा अल्केन एडिशन कोन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जे क्लोरीन ऐड करिबा क्लोरीनेशन प्रोसेस जे ब्रोमीन ऐड करिबा ब्रोमिनेशन प्रोसेस जदि आयोडीन ऐड करिबा आयोडीनेशन प्रोसेस किंतु आयोडीनेशन प्रोसेस टा हमरो डायरेक्टली हे परिबो नाही होइची काहे हे परिबोनी जो आयोडीनेशन प्रोसेस जो एजाई फॉर्मेशन हुए सेटा है मोटे रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट रो रिएक्शन टा डायरेक्टली हे परिबो नाही तो रिएक्शन टा रिवर्सिबल माने पछकू हो ए है ना जनरल माने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द हेलो अल्केन्स वर्तमान पढेबा हेलो आरीन दैट इज आरआई हाइलाइट आरएन आमे कहा को कहबा आरएन है दी हाइड्रोजन एटम which is attached to any one carbon atom of benzene दी माने बेंजीन रे समस्त पोजीशन रे कार्बन एटम अछि तो जेकोन सा भीतर जेकोन सुटे कार्बन एटम सहित गोटे हाइड्रोजन एटम लागिबो दिस इज कॉल्ड एज आरआई हाइलाइट बेंजीन स्ट्रक्चर केमति का एटा लिख परिबा तो बेंजीन रो समस्त पोजीशन रे कार्बन एटम अछि जेकोन सुटे कार्बन एटम सहित गुटे लागिबो हाइड्रोजन एटम दिस इज कॉल्ड एज आरआई यदि बेंजीन ऊपर Cl लागिले एटा कोन हो बेंजीन ऊपर Cl लागिले दैट इज क्लोरो बेंजीन से बढ़िया यदि बेंजीन ऊपर ब्रोमीन लागिबो दैट इज ब्रोमो बेंजीन एक्स बदले हम कोन बसे परिबा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हम एमती सब बसई परिबा न वर्तमान पढ़बदिन व्हाट इज आरआई हाइलाइट हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू एनी कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन डी वर्तमान तार पढ़िबा मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस विषय फास्ट कोन आसबा हमरो क्लोरीनेशन प्रोसेस क्लोरीनेशन माने आगु कहि क्लोरीनेशन माने कोन हबो एडिशन ऑफ क्लोरीन एटा कोन बेंजीन हमें यदि क्लोरीन ऐड करिवा कोन क्लोरीनेशन ले कोन हम इन प्रेजेंस ऑफ
FeCl3 कौन फॉर्मेशन हम गोटे H और Cl कंबाइन मिसी कौन हम HCl हम आउट कौन बेंजीन बेंजीन ऊपर Cl that is chloro benzene and addition of chlorine is called as chlorination process. तो यार मेकानिज्म अछि केमिति ए प्रोसेस टा हेछि तो एटा हमें कोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे तो को कहि टाइप ऑफ रिएक्शन भितरे केवल एरोमेटिक कंपाउंड हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिदा आउ जनरली जेंति सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड देयर इज हमर कोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बर्तमान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिया पई तीनटा स्टेप दे तीनटा स्टेप कोन दरकार फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थर्ड स्टेप है subtraction of H plus and in तीनटा स्टेप देखि हमें मूव करबा देले हमें कोन पाई करबा मेकानिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो केमि बनौछि ते प्रोसेस नंबर कोन है बेंजीन से कौन लगेगा Cl2 in presence of FeCl3 એટલે કોણ ફોર્મેશન હલા chlorobenzene plus HCl that is chlorobenzene अरे फर्स्ट स्टेप है से कोन लिखि तीनटा स्टेप लिखि छी से तीनटा स्टेप दे फॉलो करबो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकंड है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थर्ड है सब्सट्रैक्शन ऑफ H plus तो फर्स्ट स्टेप लिखिबा फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो Cl2 अछि Cl बॉन्ड Cl फास्ट तो मिसिबो FeCl3 से तो एतरे गुटे Cl पॉजिटिव हबो आ उठाला नेगेटिव हबो तो इलेक्ट्रोफाइल माने कोन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल माने है नेगेटिव चार्ज तो हमर बॉन्ड जनरेशन करिया पड़िबो इलेक्ट्रोफाइल माने पॉजिटिव चार्ज जनरेशन करिया को पड़िबो तले एटा जनरेशन करिया तले कोन है Cl प्लस FeCl3 या Cl माइनस एठी तीनटा क्लोरीन ए गुटे क्लोरीन चारटा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होइला प्लस FeCl4 माइनस हमें फर्स्ट स्टेप रे कोन पले पॉजिटिव चार्ज तैयारी करले दैट इज क्लोरीन इलेक्ट्रो फर्स्ट स्टेप तैयारी करले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप हमर हला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कोन हो बेंजीन रिंग से हमें Cl+ लगेगा एटाला बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड Cl+ तो हम जेकोन सुडे बॉन्ड भागी जेकोन तीनटा बॉन्ड अछि तो जेकोन सुडे बॉन्ड भागी गुटे करे पॉजिटिव आ गुटे कोन नेगेटिव तो सब ए बॉन्डटा भागी गुटे पॉजिटिव गुटे नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें चाहिए ऊपर नेगेटिव तले पॉजिटिव रखे सेमिति किछ असुविधा नै तो जेकोन सी गुटे पॉजिटिव करिवो जेकोन सी गुटे नेगेटिव करिवो कोन लगेबा Cl+ तो एटा एट लागिवो तले कोन हेला ये पॉजिटिव चार्ज अछि तो पॉजिटिव नेगेटिव से गुटे बॉन्ड फॉर्मेशन है Cl रहिला आ बेंजीन समस्त पोजीशन H अछि ए स्टेप मु शो करछि काहे कि शो करछि रिजोनेंस होबारे सहायता करिवो ईच पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग कंटेन ए हाइड्रोजन एटम किंतु एई पोजीशन हाइड्रोजन एटम मु देखिछि मतलब रिजोनेंस होइगा रिजोनेंस केमति करिया ए बॉन्डटा को एटी शिफ्ट करिया माने कोन
ए बॉन्डटा कोन एमिति थिला एमिति हो माने एई कोनटा जाई कोटो हिसे एपड जाई मिसिबो त कोन जो स्ट्रक्चरटा ए बॉन्डटा एनी शिफ्टिंग हो माने कोन एई बडा थिला एमिति हिजो देखो एई बडा अछि तो एमिति कर दो माने कोन हो एई कोनटा जाई कि एडी मिसिबो ले कोन हो स्ट्रक्चरटा Cl H एटी बनेला पॉजिटिव चार्ज तो ये तीनटा लिखिबा चाहा एमपी हमें बेंजीन ऊपर हाफ सर्कल दे पॉजिटिव Cl लिखिबा सेया परिचय गोटे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रिजोनेंस हाइब्रिड फॉर एग्जांपल बेंजीन देखिबा कोन दिया ए जे अल्टरनेटिव होइसे डबल बॉन्ड एटा बा एटा एवडा कोन these are resonating structure तो एटा कोन थिला अधे सुंदर कोन होतला दिस इज resonance hybrid तो एटा कोन थिला लॉजिकल स्ट्रक्चर एटा कोन था हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर तो एटी तीनटा बॉन्ड को मध्य माने पूरा कंप्लीट सर्कल थिला किंतु एटी दीटा बॉन्ड एटी भी दीटा विथ गुड पॉजिटिव चार्ज अछि तो सेहि पे हम कोन करे हाफ सर्कल दे के पॉजिटिव चार्ज देले ले हम दीटा स्टेप में एटा कोन दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एटा कोन रिजोनेंस हाइब्रिड तो फर्स्ट स्टेप कोन हैला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कोले सेकंड स्टेप हैला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बटन थर्ड स्टेप है थर्ड स्टेप कोन सब्सट्रैक्शन ऑफ H plus आयन तो जो हमने स्ट्रक्चर पाइले जो बाहर थिला एटी H plus माने कोन ए प्लस हो माने ए कोनटा विथ्रु शिफ्टिंग ले H plus हो ले कोन ए पॉजिटिव थिला ये पुनेला कोन न्यूट्रल हेला बेंजीन सहित Cl plus H plus आयन एटा H plus बाहला माने कोनटा यदि ए H plus हो एटा यदि H पॉजिटिव चार्ज हो कोन हो ए नेगेटिव रे विथ्रु जीवो तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हे माने सर्कल हेला बाहला कोन H plus है तो फर्स्ट स्टेप रा आउट बाहर थिला Cl माइनस सहित FeCl4 माइनस बाहर थिला तो जो H plus आयन बाहरला एठी ये H plus FeCl4 माइनस FeCl4 माइनस केमि हे Cl माइनस और FeCl3 मिसी गेछि H plus Cl माइनस मिसी कोन हो HCl plus FeCl3 देखो FeCl3 गोथला एज ए कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप रो दा हेड करथिली लास्ट स्टेप तक हमें बाहर करी कैटलिस्ट जोटा एई बया जिनिस जोटा कि रिएक्शन होबारे सहाय्य करे बट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन हैला तो एटा हला मेकानिज्म ऑफ हमर क्लोरीनेशन प्रोसेस तीनटा प्रोसेस दे जाईची फर्स्ट ला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तापर जे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तापर जे सब्सट्रैक्शन ऑफ H+ आयन फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कोले तापर इले बेंजीन सेटेला लगे कि रिजोनेंस स्टेबिलाइज कोले तापर लास्ट स्टेप कोन कोले H+ आयन हमें सब्सट्रैक्शन कोले एटा क्लोरीनेशन प्रोसेस सेही बढ़िया ब्रोमिनेशन हो ठीक है तो क्लोरीनेशन में ऐड कले कोन एडिशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमिनेशन प्रोसेस में ऐड करबा एडिशन ऑफ
ब्रोमीन से बळे ये Cl2 क्लोरीनेशन प्रोसेस का प्रेजेंस होइतिला एडिशन ऑफ Cl2 होइतिला इन प्रेजेंस ऑफ FeCl तो एटी कैटलिस्ट कोन थिला FeCl3 एटी कोन हो FeBr3 जेमती हालो अल्केन हमर अल्केन प्रिपरेशन करथिले अल्केन हाइड प्रिपरेशन करथिले फ्रॉम अल्केन जेई बळे हेतिला एटी सेई बळे हबो क्लोरीनेशन कोन थिला एडिशन ऑफ क्लोरीन डोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन किंतु फ्लोरीनेशन प्रोसेस हे परिबो नाही काहे हे परिबोनी फ्लोरीन एटम इज हाईली रिएक्टिव तो जेटा हाईली रिएक्टिव फ्लोरीनेशन प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस बाकी कोन रहला गुटे आयोडीनेशन प्रोसेस आयोडीनेशन प्रोसेस कोन बेंजीन सहित कोन ऐड करबी आयोडीनेशन I2 तले गुटिए H गुटिए I कंबाइन कोन हम H I हबो आ रहला कोन बेंजीन ऊपर I that is आयोडो बेंजीन हला तो एटा फास्ट आइ कहते जो आयोडो बेंजीन रिएक्शन हबो जो HI फॉर्मेशन होछि एटा गुटेला रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट को प्रेजेंस कोन हो एटा ऑटोमेटिक पछु जले रिडक्शन करबा पछु को चल जिवो तो रिएक्शन रे हमर कोन जिवो रिवर्सिबल हे जिवो तो रिएक्शन रे हबा पय हम कोन करे पड़िबो एजाय को भांगे पड़िबो तो एजाय को न्यूट्रल करे पड़िबो तो एजाय गुटेला रिड्यूसिंग एजेंट ताको न्यूट्रल करिया पय हम कोन दरकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोन कोन पय यूज करि परिबा such as nitric acid, iodic acid, etc. बुझिला सेतमे आगो क्वेश्चन पढितली आयोडीनेशन प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली आयोडीनेशन प्रोसेस ता डायरेक्टली हे परिबो नाही काई हे परिबोनी जो एजे फॉर्मेशन होची एजे रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन ता ऑटोमेटिक प्रोसेस को चलछ ऑटोमेटिक प्रोसेस बोले कोन रिएक्शन ता कोन हबो रिवर्सिबल हबो तो रिवर्सिबल हेले कोन हबो तो हमें रिएक्शन हे परिबो नै तो हम रिड्यूसिंग रिएक्शन हबा पई रिड्यूसिंग एजेंट को हमें न्यूट्रल करिबा तो रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रल करिया पई कोन करबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड हमें यूज करिबा फॉर द रिएक्शन प्रोसेस तापरे साइड चेन हाइड्रोजनेशन कौन साइड चेन हाइड्रोजनेशन माने दी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम और एडिशन ऑफ halogen atom to the benzylic carbon atom benzylic carbon atom का कोनती हमें पढ़िसे benzylic halide का कोनती the halogen atom which is attached to the carbon atom next to the benzene ring बेंजीन रिंग परे जो कार्बन एटम थिबो सेते लागियो हाइड्रोजन एटम तो बेंजाइलिक कार्बन एटम कोन कार्बन एटम आफ्टर दी बेंजीन रिंग परे जो कार्बन एटम थिबो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन एटम पहले क्वेश्चन केमती पडिबो presence of sunlight तो बेंजीन रिंग पर जो कार्बन एटम तले एटा दिस कार्बन एटम इज बेंजाइलिक कार्बन एटम तो साइड चेन हाइड्रोजनेशन कोले कोन हबो
ए बेंजाइल कार्बन एटम गोटे हाइड्रोजन एटम बाहरिबो ता बदले हम कोन ऐड करबा गोटे हाइड्रोजन एटम कोन जो स्ट्रक्चर टा बेंजीन ऊपर CnCl CH3 पुणी जदि गोटे क्लोरीन ऐड करबा सनलाइट कोन हम पुणी एट एज अछि तार एज ता रिप्लेसमेंट है कि ता बदले कोन बसिबो Cl बसिबो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है आउट एग्जांपल को देखो Cl2 ऐड करबा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिंग या पर कार्बन एटम एटा दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बन एटम तो बेंजाइल कार्बन एटम में हाइड्रोजन उठेबा ता बदले कोन बसो हाइड्रोजन ऐड करबा ले कोन जो स्ट्रक्चर टा CHCl पुणी आपरे ऐड कर कोन Cl2 in presence of sunlight तो एटी उडे एज आउट उडे Cl कोन हम HCl हबो ले कोन हम बेंजीन सहित CCl CH2 CH3 लेट कोड रिप्लेस हम फ्रॉम द बेंजाइलिक कार्बन एटम ले साइड चेन हाइड्रोजनेशन माने बेंजीन परे जो साइड चेन थिबो सेथरा हम हाइड्रोजनेशन करिबा ले एटी कोड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हमर कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग दैट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम नेक्स्ट एथर प्रिपरेशन भितर हम आसीबो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन bromobenzene and iodobenzene from BDC मैं BDC रू तैयारी करिया कोन फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन BDC बोलबो कोन बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड तो बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड माने तर दीटा फॉर्म अछि दैट इज बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड तार को दीटा फॉर्म अछि उटा न्यूट्रल फॉर्म और एला आयनिक फॉर्म न्यूट्रल फॉर्म माने कोन N डबल बॉन्ड N Cl न्यूट्रल रिप्रेजेंट न्यूट्रल फॉर्म आयनिक फॉर्मेशन कोले कोन पॉजिटिव नेगेटिव तो बेंजीन ऊपर कोन N2 plus Cl minus एटा है न्यूट्रल फॉर्म एटा है आयोनिक आय बर्तन बीडीसी रू तयारी करबा फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन फर्स्ट BDC to फ्लोरोबेंजीन BDC प्रथम कोन बेंजीन ऊपर N2 plus Cl minus का सहित मिसिबा HbF4 that is फ्लोरो बोरिक एसिड HbF4 कोन H plus BF4 minus H plus Cl minus कोन HCl और रहेगा कोन N2 और BF4 तब रहेगा कोन बेंजीन ऊपर N2 plus BF4 minus हीट करे कोन इवेपोरेट हो नाइट्रोजन गैस N2 गैस इवेपोरेट हैला
यदि बोरोन रहला फ्लोरीन बोरोन गुटे आइटम फ्लोरीन गुटे आइटम बोरोन और फ्लोरीन भितर हम बॉन्ड तैयारी करि परबा बोरोन बैलेंस के 3 फ्लोरीन बैलेंस के 1 the bond कोन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो that is BF3 आ कोन होइला गुटे F रहला आ कोन होइला बेंजीन बेंजीन ऊपर F that is फ्लोरो बेंजीन एटा बामे कोचे फ्लोरो बेंजीन माने तमे कोन हला बीडी से HBF पर मिसेले HBF पर माने फ्लोरोबोरिक एसिड H + BF पर माइनस H + Cl माइनस कोन हला HCl होय गला N2 + BF पर माइनस हीट कले कोन इवेपोरेट नाइट्रोजन गैस गुटे इवेपोरेट हला आ गला कोन बोरोन और फ्लोरीन भितर की प्रकार एटम कंपाउंड फॉर्मेशन हो BF3 आ कोन बेंजीन रेटा आउटे F रहला चारटा थिला तीनटा जाउटे दैट इज फ्लोरो बेंजीन the theory kon likh paribo BDC react with HBF4 to give an addition product ira ame ju kari bahar korche to give an addition product which on heating gives fluorobenzene the reaction name achi this reaction is called as Black Sitzman reaction এই reaction আমি কোন কইবা Black Sitzman reaction that is preparation of fluorobenzene from BDC next BDC तो हमें तैयारी करिबा fluorobenzene and bromobenzene BDC compound benzene ऊपर N2 plus Cl minus यदि हीट कले ए नाइट्रोजन गैस आ कोन होइला बेंजीन रहला Cl बेंजीन ऊपर Cl that is chlorobenzene एमिटी कैटलिस्ट नबा CuCl in presence of HCl यदि हम कैटलिस्ट चेंज कर दबा CuBr in presence of HBr देखो एटी CuCl HCl नेली कोन हैला क्लोरोबेंजीन तो चेंज कर यदि CuBr HBr फॉर्मेशन करबी चेंजेस इज ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन इज there is formation of benzene over Br that is bromobenzene देखो तो CuCl समान रिएक्टेंट सही अनुसार प्रोडक्ट है CuCl HCl ने फॉर्मेशन कोन होची क्लोरोबेंजीन CuBr HBr ने कोन फॉर्मेशन होची ब्रोमोबेंजीन this reaction is called as Sandmeyer reaction ए रिएक्शन हमें कहबा Sandmeyer reaction यदि करिया टिके चेंजेस हो मतलब N2 plus Cl minus एटी कोन एटली CuCl HCl सॉल्यूशन एटी नेबी ओनली कॉपर पाउडर इन HCl सॉल्यूशन प्रोडक्ट तो समान हो नाइट्रोजन गैस हो बेंजीन ऊपर Cl हो एमटी सेटी तळ पाई कोन हो N2 plus Cl minus ए कॉपर पाउडर इन HCl सॉल्यूशन नेली ने जदि कॉपर पाउडर इन HBr सॉल्यूशन नेबी कोन हो नाइट्रोजन गैस इवापोरेट हैला एटा कोन बेंजीन ऊपर Pr that is bromobenzene तो देखो एथरे रिएक्टेंट जा एथरे रिएक्टेंट से एथरे प्रोडक्ट जा एथरे प्रोडक्ट से डिफरेंस हैला एटी CuCl HCl सॉल्यूशन में कोन फॉर्मेशन होची क्लोरोबेंजीन CuBr HBr सॉल्यूशन में कोन फॉर्मेशन होची ब्रोमोबेंजीन एटी किंतु कोन होची कॉपर पाउडर HCl सॉल्यूशन कोन फॉर्मेशन है क्लोरोबेंजीन कॉपर पाउडर HBr सॉल्यूशन कोन फॉर्मेशन होची ब्रोमोबेंजीन जे CuCl HCl सॉल्यूशन किंबा CuBr HBr सॉल्यूशन हमें कोन होचे Sandmeyer रिएक्शन सही बढ़िया कॉपर पाउडर इन HCl सॉल्यूशन और कॉपर पाउडर इन HBr सॉल्यूशन is called as Butterman reaction तो Sandmeyer रिएक्शन और Butterman रिएक्शन भितरे दी जनकर ये समान रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब समान
difference that is CuCl HCl solution, CuBr HBr solution, that is same reaction. सेटी होची copper powder in HCl solution or copper powder in HBr solution, that is Quatermain reaction. Depend on catalyst, Sandmeyer, depend on catalyst, water. Next, that is last BDCU iodobenzene.